Welcome to Nation Now. I'm Pradeep Nambiar. The Mumbai anti-narcotics cell have been doing a fantastic job. ये हफ्ते में जबरदस्त काम किया. The day, the 26th June, just this International Day of Drug Abuse. The United Nations celebrated all over the world. Mumbai में भी जबरदस्त celebrations हो गया. We got functions in the outside NCPA, Marine Drive, Bandra West, Carter Road के सामने. We had at Somaya College students taking part. बड़ा प्रोसेशन देखिए चले पूरे मुंबई में एक जन जागृति अभियान कॉलेजेस के बाहर स्कूल के बाहर the entire thing has been orchestrated by the DCP anti-narcotics cell Datta Nalawade ji and definitely with the Mumbai police absolute cooperation and help. Drugs एक जबरदस्त menace है. How are we going to curb it? The challenge is huge. जिस प्रकार से आप देख रहे law is the crystallization of habits and thoughts of the society. When a society degenerates or its moral fiber is impaired, the legal system reflects its depravity. United Nations find that drugs is a big threat. The Mumbai police find drugs as a big threat. पूरे जन जागृति के अभियान पूरे मुंबई में उन्होंने शुरू किया था. And after that, this week we saw 3 big catches. One, but the major catch by the Ghatkopar unit of the anti-narcotic cell. After that, you had the Kandivali unit of anti-narcotic cell and the Azad Maidan unit of anti-narcotic cell. Together, mephedrone, MD drug, they caught in huge quantity, nearly 65 lakhs worth of drugs were caught. 65 lakhs worth of drugs, mephedrone caught. Or 4 to 5 people were arrested. Among them, one Nigerian, कुछ लोग कुरला से. The most important thing is that both, if you see, the Kurla में 2 seizures हो गए this week near Kurla SDIL building. One was affected by the Ghatkopar unit and the other by the Kandivali unit, and both were major catches and both from the same area. So Kurla has become kind of mushrooming. बहुत जबरदस्त drug peddlers है, drug trade है, जबरदस्त mushrooming है Kurla इस area में, इस क्षेत्र में. उसको एक चैलेंज की तरफ एंटी नार्कोटिक सेल को लेना पड़ेगा. We find mephedrone as on today can be manufactured at home. आप घर पे बना सकते हो, अलग-अलग जगह पे आप बना सकते हो. You don't have to import it from outside. तो इस चीज को कंटेन करें, कंट्रोल करें, कैसे करें? The factories that are set closer to Mumbai, outside Mumbai, मुंबई के borders में जिस प्रकार से mephedrone बनाने वाली factories है, because today most mephedrone replaces cocaine and other drugs. Cocaine is expensive. 1 gram of cocaine आपको 6,000 से लेके 8,000 तक मिलेगा. Mephedrone is available for 1 gram 2,000 rupees से कम, averaging 2,000 rupees. तो mephedrone आज के teenagers के सामने एक बहुत बढ़िया drug है, party drug है. You have fantastic effects of the drug for a limited period of time, but after that the drawbacks are immense and terrible. एंटी नार्कोटिक सेल के सामने एक बहुत बड़ा इसलिए भी चैलेंज है कि तरह के टाइप्स ऑफ मेथड जिस प्रकार से ड्रग ट्रेड कंडक्ट किया जा रहा है. मशरूमिंग राइट फ्रॉम स्लम्स टू द हाई राइजेस, सब जगह आज ड्रग्स प्रिवेलेंट है, इजीली अवेलेबल है. कैसे रोके? जैसे हमने कहा कि मेफेड्रोन यू कैन मेक इट इन अ प्रेशर कुकर. आपको सिर्फ प्रेशर कुकर की जरूरत है एंड द राइट काइंड ऑफ फॉर्मूला. एंटी नार्कोटिक सेल का जबरदस्त संघर्ष चला है अगेंस्ट नाइजीरियन पेडलर्स. नाइजीरियन पेडलर्स को उन्होंने अपने काबू में रखने में बहुत सफल रहे हैं. ये 5 यूनिट जो है, स्टार्टिंग फ्रॉम आजाद मैदान यूनिट, वर्ली यूनिट, बैंड्रा यूनिट, you got the Ghatkopar unit and the Kandivali unit. All the units are competing with each other to see that drug menace ends. But I don't think ये 5 units या anti-narcotic cell के deputy commissioner दत्ता नलवाड़े 24/7 continuous monitoring, ये ड्रग मेनेस को खत्म करना एक बहुत मुश्किल काम है. इसको आपको पूरे जितने पुलिस स्टेशन है मुंबई के उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा. वी हैव बीन सीइंग दैट जिस प्रकार से आज नेचुरल ड्रग्स है, नेचुरल ड्रग्स बनी, ये भांग है, गांजा है, चरस है और उसको इंप्रूव करते हो बड्स, मारुआना बड्स, क्यूरेटेड बड्स, हाइड्रोफोनिक वीड जिस प्रकार से घर में वीड को डेवलप कर रहे हैं हाइड्रोफोनिक तरीके से, with less use of soil and having the atmosphere controlling kind of instruments that were placed with. Among the natural drugs, apart from this marijuana and the cannabis, you got the opium. Opium
जिसमें हफीम, उसका बाय प्रोडक्ट जो हीरोइन है, ब्राउन शुगर है, अ बिग चैलेंज। देन यू गॉट कोक, जो कोक जिस प्रकार से तो इस, और ये मारुआना जो ड्रग्स है उसमें सातिवा, इंडिका, रुडारुलस, हेम्प, हाइब्रिड, कनाडा, बहुत सारे प्लेसेस इन कनाडा, बहुत सारे स्टेट्स इन कनाडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव मेड कैनबिस इज लीगल। So we had a lot of import of these kind of curated buds of marijuana, by the way of import of breakfast meals, जो breakfast के चीज़ें होते थे, biscuits हो गया, cookies हो गए, cakes हो गए, उसके माध्यम से उसके पैकेट में इसको छुपा के यहाँ पर import. When Samir Wankhede was there as the head of Narcotics Control Bureau Mumbai unit, there was nearly a catch every day. जो फॉरेन पोस्ट ऑफिस से रेड मारा गया था और वहां पर तरह तरह के अलग अलग पैकेट्स में, सीरियल्स के पैकेट में, बिस्किट के पैकेट में, कुकीज के पैकेट में, इस चीज को कैसे ब्रेक करने में कामयाब हो गए थे। टेक्नोलॉजिकली ये ड्रग पेडलर्स और जो ड्रग माफिया है हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम से 2 कदम आगे है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन। बिकॉज डार्क वेब के हमने देखा कि डार्क वेब का इस्तेमाल, जिसपे you can't catch the real person, because अलग अलग डार्क वेब में अलग सिग्नेटरीज होता है, प्रोफाइल अलग होता है, अलग प्रोफाइल से अलग लोगों को ऑर्डर करना और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पेमेंट करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। We'll come back to what we the catches, the catches around 65 lakhs. Mumbai anti-narcotics cell have been doing a fantastic job. That is for everybody to upload, but the government will have to provide our enforcement agencies with better tools, better technology, better gadgets, and a little more workforce. Because Mumbai में अकेला, if you say the Mumbai 600 crore के drug trade है, 600 crore के drug trade है. When Samir Wankhede was in charge of the Mumbai Narcotics Control Bureau, हमने देखा कि 14 dreaded gangs eliminated, 14 gang को eliminate किया था, 14 huge gangs. And that most of the gangs were connected to the D gang. Ibrahim Kaskar gang, Chikna gang was Pathan gang, जो पूरे मस्जिद बंदर और अलग अलग जगह से उन्होंने ऑपरेट कर रहे थे, अभी सब जेल में है। वो चिंकू पठान था, आरिफ बुजवाला was there. The Pathan gang, a different kind, along with the Chikna gang. The Chikna gang was actually the Rafiq Chikna, Danish Chikna. These were the people operating. Karamjit gang, Bollywood को सप्लाई करने वाला, बबलू पटरी गैंग। लकली बहुत सारे ये लोग हैं सब जेल के अंदर है, they are behind the bars in jail. बबलू पटरी was operating in कुरला ईस्ट और पूरे जो सेंट्रल सबर्ब्स है उसमें जबरदस्त ट्रेड है। आज वो जेल में है, छूटा नहीं है, बट गैंग स्टिल ऑपरेटिंग। सुल्तान मिर्जा गैंग, हाइड्रोपोनिक वीड के गैंग होते, अरशद जावेद गैंग, टाइगर मुस्तफा गैंग। बट दिस टाइगर मुस्तफा गैंग वाज ऑपरेटेड इन द एंटायर कोंकण बेल्ट, मुंबई हो गए, पूरे कोंकण एरिया हो गए, गोवा हो गए। Azam Jumban gang, Bandari gang, Batata gang. I think Batata gang has run off. They're operating basically from Mumbai western suburbs में. Zaid Rana gang, Sam Langda gang, Azim Bhau gang, Azim Bhau Anis Ibrahim gang का। तो ऐसे खतरनाक जो gangs थे और उसको operate और उसको take on करने में, I think the government will have to put its entire might behind these enforcement agencies. Beyond that, it's impossible. Because in every system, there's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice. Whether to give supremacy to the law or to the will of the people. Whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by physical one kept together law. We have a choice now. The entire, as well as crystallization and habits and thoughts of the society. Just prakar se habits and thoughts of the society chal raha hai. We got a challenge before us. We got to challenge the enforcement agencies को किस प्रकार से हम मदद करें, उनके information network को किस प्रकार से आगे बढ़ाएं. That's a challenge, and how we going to do it is a big thing. We need a cooperation. Alone, one Datta Nalawade or 5 units of the anti-narcotic cell cannot wipe out the entire drug trade of Mumbai. You need something very concrete. We are working towards that thing that is concrete. It is after all the choice that we make. जिस प्रकार से हम चीज को इनकॉर्पोरेट कर, आज केमिकल ड्रग्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे पास। केमिकल ड्रग्स स्टैंड्स फॉर मेफेड्रोन, जैसे मेफेड्रोन मेयो ड्रग, most easily cheap available drug and has the maximum and beautiful effect on the people who are consuming it. Spice, again synthetic weed. Glass, crystal methamphetamine. Ecstasy, MDMA,
party drug available in big quantities across Mumbai, and every, you can say, जितने भी disc है, hotels है, pubs है, यहाँ पर आपको ये चीज़ मिलेगा. LSD, small blots, destroy. Initially, the teenagers will find it great. It gives a fantastic effect. It gives you a very pleasurable effect, a very mood maker, a fantastic mood maker. But the withdrawal symptoms are awful. और जो भी ये synthetic drugs में import and zombie. आजकल जो Nigerian drug peddlers है, zombie is much more cheaper than methadone. इसका consume करना यानी you are waiting for the teenagers to die at a very young age. You need to control a big challenge. Amphetamine, ephedrine, methaqualone. Now, एक drugs and the poor people, जो गरीब से गरीब लोग हैं, वो cough syrup लेते हैं. इसको रोकना पड़ेगा. There are actions, but a lot needs to be done. We can't take the very fact that our anti-narcotics cell, Mumbai police, के एक जबरदस्त काम कर रहा है. But we as a republic have got something to do. When Samir Wankhede and Datta Nalawade, when he was there, he equated drug to narco-terrorism. Use of drugs for anti-India terror purposes. तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सेंट्रल एजेंसीज के लिए भी और हमारे लोकल पुलिस के लिए. How are we going to combat it? And if we are going to combat it, only the enforcement agencies alone cannot fight the battle. It has to be a concerted effect. All the parties, all the stakeholders, including we the people. As our constitution says, we the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity. Justice is social, economic and political. Equality before the law and equal protection of rights. Liberty is freedom of speech, expression, faith, worship and belief, and right to life, liberty and pursuit of happiness. And fraternity is believing in the territorial and political integrity of the nation. How far do we stretch our freedom? That is what we need to know. We need to know our due diligence. We need to know our restrictions, reasonable restrictions on freedom. Till then, we have a lot to do. Alone, the enforcement agencies cannot enforce it. We all have to play our own part. That's all from Pradeep Nambiar. Nation Now will come with more news and more informative things for people to view. Thank you.